Assalamu alaikum. Once again with Mudassir. English with Mudassir. I hope you are fine. In previous lecture I talked about what is present perfect tense. In today's lecture I will be talking about present perfect continuous tense. But before going to this tense, something is very important. Without that we will not be able to understand this tense. इस टेंस के जाने से पहले आपको मैं कुछ बताने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बगैर आप इस टेंस को नहीं समझोगे. Let's come with me. So here we have two things: period of time and point of time. First, one must know about it before going to present perfect continuous tense, or past perfect continuous tense, or future perfect continuous tense. When you are going to that tense, you must know about these two things. Period of time. So in period of time we have unknown time. Period of time means unknown time. We have time, but it is unknown. It is not the exact time. Is used for duration of time. It is used for duration of time. हम एक दौरानिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दौरानिया हमें मालूम नहीं होता कौन सा दौरानिया. हम कहते हैं 2 साल. कौन से 2 साल? Got it? So we have for 10 minutes. कौन से 10 मिनट? पिछले घंटे वाले या 2 आवर बाद 10 मिनट. Unknown. For a day, for 5 days, for a week, for a month, for 3 years. कौन से 3 साल? 10 साल पहले, 10 साल बाद. For 2 decades, 1 decade is equal to 10 years. 2 decades for 20 years. कौन से 20 साल? For a couple of months, for several times. So those times वो औकात, वो दौरानिये जो कि जिसका टाइम एग्जैक्ट मालूम न हो, उसके लिए फिर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे. So here the second thing is point of time, known time, the exact time, the known time. So we are using for that since. We are using for known times. Is used for specification of time, exact time. So since morning, today's morning, this is the known time we have. Since yesterday, the previous day, it is known. June, the month of June. Sunday is the name of the day, the exact day. Since 1995, demise of my father, the death of my father, the marriage of my brother, it is the known date. So those which are known to us, we will be using since for it. Those time which is unknown for us, we will use for them. वो दौरानिये, वो औकात जो हमें एग्जैक्ट मालूम हो, उसके लिए हम since इस्तेमाल करेंगे. और वो औकात जो हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं हो, उसके लिए हम फॉर इस्तेमाल करेंगे. जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे आ जाएंगे, you will know it easily. It will be very easy for you people when you are translating sentences in present perfect continuous tense. What will be the recognition of present perfect continuous tense? Let's see. Recognition in Urdu. What will be the recognition? How we will be able to understand a sentence in Urdu? This sentence is belong to present perfect continuous tense. हमको किस तरह पता चलेगा कि ये उर्दू की ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलती है? You will look at the end of the sentence. आपको end of sentence में देखना होगा कि अगर ये चीजें end of sentence में आ रही होती है, तो you know that this sentence is belong to present perfect continuous tense. So which form of verb will be used? First form of verb will be used plus ing. एक चीज आपको जरूर याद रखना होगा कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आ जाए, ये हमारे साथ 6 है: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी.
सो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी तो गो गोइंग बन जाएगी और वेंट एंड गॉन, तो हम ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे प्लस आईएनजी के साथ। हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, व्हिच हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड, हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन विल बी यूज्ड विद ही शी एट सिंगुलर नेम, ये सब्जेक्ट आ जाए तो उसके साथ हम हैज बीन लगाएंगे, अदरवाइज हम हैव बीन, वी विल बी यूज्ड हैव बीन विद दीस subjects. Look at the positive sentences. I already told you positive are those sentences which we are doing something, जिसमें जो हम काम करते हैं उसको हम positive sentences कहते हैं। Look at the structure. Structure किस तरह होगा? Structure is very much important. Subject पहले subject लगेगी, then has, have subject के मुताबिक, then being helping verb हर किसी के साथ, first form plus ing, then object, this since for according to the time, अगर टाइम नोन हो तो since लगाएंगे, अननोन हो तो for लगाएंगे। rest of the sentence, remaining sentence जो भी आए, rest of sentence, remaining of sentence, बाकी माना जुमला। हमारे साथ जुमला है वो पेशावर, वो 5 साल से पेशावर में रहता रहा है। so first you will look at this place, रहता रहा है। This shows us this sentence is belong to रहता रहा है, था रहा है, था रहा है। So this sentence belong to present perfect continuous tense. And one thing more, it shows us it is male. For male we are using he. जब हमारे साथ मेल हो और ओहो हो और वाहिद हो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ही। तो किस तरह हम तब्दील करेंगे, पहला सब्जेक्ट लगाओ, फर्स्ट पुट सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हमने क्या कहा, हैज बीन, लिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ing, living, he has been living in where, Peshawar, object या complement, he has been living in Peshawar 5 साल से, कौन से 5 साल पता नहीं है, 2007 से पहले, 2010 के बाद, unknown time, तो हम for लगाएंगे। Living in Peshawar for 5 years। जब हमारे साथ unknown time हो उसके लिए हम for इस्तेमाल करेंगे। I told you in the beginning of the lecture, हम शाम से मैच देखते रहे हैं, हम we देखते रहे हैं, ते रहे हैं is belong to ते रहे हैं, यहां से मिलते हैं। दिस सेंटेंस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हम वी के साथ हैव बीन, वॉच एंड आईएनजी, वॉचिंग, we have been watching, मैच, शाम से, शाम मालूम है एग्जैक्ट टाइम है तो since लगाएंगे, since evening। जब हमारे साथ टाइम मालूम हो तो फिर हम since लगाएंगे, unknown के साथ हम for लगाएंगे। Now coming toward the negative sentences, now coming toward the negative sentences, negative sentences में क्या होगा, थोड़ी सी स्ट्रक्चर में तब्दीली आएगी। There will be a little change in the structure of negative sentences. Subject plus has have के बाद not लगाया जाएगा plus being और then उसके बाद हम put करेंगे being। Subject has have, then not, then being, then verb first form ing plus subject object plus since for plus rest of the sentence. So look at the sentence, अली और सदब 1 घंटे से बातें नहीं करते रहे हैं।
we are changing Ali and Sadaf. Plural name. I told you with plural name के साथ हम have लगाएंगे. Ali and Sadaf have के बाद not, been, talk, ing, talking. Ali and Sadaf have not been talking. सदफ 1 घंटे से बात ही नहीं कर रहे. Ali and Sadaf have not been talking 1 घंटा. मालूम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हम फॉर लगाएंगे. फॉर an hour. I told you hour. H is silent here. I told you that those words which are silent I will put a cross over that words. Hour. It is not hour. It is hour. सेकंड सेंटेंस, वो सुबह से खत नहीं लिखती रही है. It means that this sentence is belong to present perfect continuous tense. And one thing more, it is female. क्या है? फीमेल है. तब फीमेल आ जाए और एक हो तो उसके लिए फिर हम she लगाते हैं. तो वो की जगह हम she लगाएंगे. she के साथ has. She has के बाद not. She has not. फिर been. स्ट्रक्चर को देखो, जो स्ट्रक्चर में होगा स्ट्रक्चर को देखो, उसके मुताबिक जुमला बना. She has not been writing. Write ing. Writing letter. सुबह से, टाइम एग्जैक्ट है, मालूम है. Since morning. Got it? जब टाइम मालूम हो फिर since, जब मालूम नहीं हो तो फिर for लगाएंगे. Interrogative sentences. I told you when we put the helping verb of a sentence in the start of the sentence, then it will consider as negative interrogative sentences. जब हम helping verb को जुमलों के आगे में लगाएंगे तो वो जुमले interrogative consider होंगे. Let's see the structure. Has, have, been plus subject plus been. Has, have plus subject plus been plus first form of verb ing plus object. Since for plus rest of the sentence. किया अली दोपहर से मुतालिया करता रहा है. So किया अली ता रहा है. It means that करता रहा है. It means that this sentence is belong to present perfect continuous tense. Then let's change. और इससे हमें मतलब किया अली. अली हमारे साथ नेम है और लड़के का नेम है, तो अली के साथ हम हैज लगाते हैं. हैज को आगे करेंगे. According to the structure, has Ali particular name है. Has Ali been studying ing. Has Ali been studying दोपहर से. मालूम टाइम है, नोन टाइम है, तो इसलिए हम since लगाएंगे. Has Ali been studying since afternoon? आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. लास्ट सेंटेंस, क्या वो पिछले रात से सोता रहा है, ता रहा है. दिस सेंटेंस इज बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरा चीज मालूम होता है, मेल है और सिंगुलर मेल है. एक बंदा है, तो एक बंदे जब आ जाए सिंगुलर हो तो उसके लिए फिर हम ही लगाते हैं. तो ही के साथ हम हैज इस्तेमाल करें. हैज को आगे करेंगे. हैज ही बीन sleeping. Sleep ing. Has he been sleeping since last night? Why I put since? Because last night is the exact time, particular time. तो यहाँ पर जो भी वक्त हमें मालूम होगा उसके लिए हम since इस्तेमाल करेंगे. जो वक्त हमें मालूम ना हो उसके लिए हम
फॉर इस्तेमाल करेंगे. If you have any question regarding present perfect continuous tense, you can ask in comment section. Like my video, share it with your friends, subscribe my channel, and one thing more, click the bell icon must. Thanks for your time. See you in the next video.